अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पाकिस्तान और बरतानिया आपस में शुरू से ही अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। पाकिस्तान का एक डेवलपमेंट पार्टनर है बरतानिया। जिस तरह पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान शेयर्ड लेगेसी है, इसी तरह कश्मीर अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन है और बरतानिया में भी उस पर बात होती है। बाकायदा वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर ग्रुप्स हैं और पाकिस्तान तो ऑल आउट सपोर्ट करता है। पाकिस्तान कहता है सफारती अखलाकी मदद देंगे, सियासी मदद देंगे। पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से और इसी तरह हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है कश्मीर के हवाले से। लेकिन कश्मीरी रहनुमा जहाँ भी दुनिया में हैं वो कश्मीर को नहीं भूलते, क्योंकि कश्मीर रिमेन्स अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन। आज का ये प्रोग्राम हम आपके सामने एक खसूसी हैसियत से पेश कर रहे हैं और वो खसूसी हैसियत है कि ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन, वेरी ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, वो पाकिस्तान के दौरे पे आए। हमने उनके साथ बातचीत की। मैं उनका तारफ़ करा देता हूँ। मेरे रूबरू हैं ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट एंड्रयू साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर। मिस नाज शाह साहिबा, ऑनरेबल मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आएँ। ऑनरेबल मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट साइम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर टू आवर स्टूडियो। और राजा नजाबत हुसैन साहब कश्मीरी रहनुमा हैं, चेयरमैन हैं ओवरसीज़ कश्मीरी ग्रुप के, बहुत शुक्रिया राज साहब। आपकी वजह से पॉसिबल हुआ कि इतने अच्छे मेहमान हमारे स्टूडियो में आ गए। आई स्टार्ट विद यू एंड्रयू साहब। You've been here in Pakistan and you have also visited Mirpur and Muzaffarabad. To start with, I want to talk about the relationship between Pakistan and the United Kingdom, Britain. How do you foresee the further growth of these relationships, because there is sizable trade between the two countries, both in goods and services? What is the future? Well, I think there's a really important relationship to be further developed between the United Kingdom and here in Pakistan. We have historical links, we have cultural links. There is a very sizable Pakistani diaspora in the United Kingdom, people who make both the UK and here in Pakistan their homes, but also there's a lot of business between the two countries. I think that could flourish, it could be developed still further. There are lots of opportunities that the United Kingdom and Pakistan could grasp to the betterment of both countries. We have shared values, we have a shared history, legacy, and also the English language helps as well, because it is an international language. So it gives Pakistani businesses a competitive advantage in the global marketplace as well. So let's hope that we can build on our friendships, our historical links, to have a stronger future relationship between our two great countries. That's good to hear from you. Naz Shah साहिबा, एक पाकिस्तानी ओरिजिन की खातून होते हुए आई मेट सईदा वारसी साहिबा या दीगर जो आती हैं, आपका हम बड़ा नाम सुनते हैं, आपकी स्टेटमेंट्स हम टीवी पे चलाते हैं और I'm lucky enough कि आज आप हमारे स्टूडियो आज टेलीविज़न तशरीफ़ लाई हैं। पाकिस्तान आना कितना अच्छा लगता है? डायस्पोरा की इन्होंने बात की। पहले तो शौकत साहब बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इनवाइट किया यहाँ आपकी चैनल पर और ये मौका हमें दिया। देखें, मैं तो कश्मीर की बेटी हूँ, पाकिस्तान की बेटी हूँ, तो मुझे तो अच्छा ही लगता है जब भी यहाँ आती हूँ। तो जब मैं मीरपुर जाती हूँ, चकसवारी जहाँ मेरा तल्लुक़ है, वहाँ मेरे नाना नानी की कब्रें हैं, वो भी इमोशनल सा होता है। तो मेरे तो यहाँ से लिंक है। और आज़ाद कश्मीर में 2.5 साल रही भी थी टीनेज ईयर्स में, और वहाँ स्कूल भी गई थी। तो वो लिंक यहाँ से ख़त्म नहीं हो सकता और वो बहुत अच्छा लगता है। और ये भी अच्छा है कि देखें मेरी जो कंस्टिट्यूंसी है और वो 50% से ज़्यादा जो है मुसलमान हैं और वो लार्जली आज़ाद कश्मीर के रहने वाले हैं। आपका हल्का कौन सा है? ब्रैडफोर्ड वेस्ट।
ब्रैडफोर्ड वेस्ट में हूँ, और वहाँ से जो आधा पाकिस्तान है, वो तो उससे छोटा पाकिस्तान कहा जाता है, ये स्मॉल पाकिस्तान। उर्दू में लिखा होता है होटलों के ऊपर खाने कौन से मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ एक थ्राइविंग इकोनॉमी है। ब्रिटिश डायस्पोरा जो है वहाँ की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं, जो वापस आकर यहाँ जो कोठियाँ बनती हैं, यहाँ जो रिमिटेंस आती है, वो यहाँ की भी इकोनॉमी को मदद मिलती है। तो दोनों के लिए हमारे ये जो रिलेशनशिप्स है ना, पाकिस्तानी डायस्पोरा, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम, जहाँ कहीं भी हों, मैनचेस्टर में, तो वो लिंक बहुत अच्छा है और ज़बरदस्त है, और उसे हमें ज़्यादा मजबूत करना है, उसको ज़्यादा मजबूत करना है। ऑनरेबल सैम, how do you feel how to further strengthen the relationship between Pakistan and the United Kingdom? Look, I think the biggest opportunity is cooperation around trade. Okay. I represent, like Naz does, a very large Pakistani diaspora community. We've been jointly campaigning, for example, for the return of Pakistan International Airlines to Heathrow for direct flights, and of course to Manchester as well, because at the moment, that is a hindrance to business. Exactly. Because you have to have longer stopovers. We've been working with the Pakistan High Commission on that particular project, and we're hoping for positive news on that front later this month, because many people have businesses. Excuse me, you are making a very big statement, which concerns all of us as Pakistanis who usually travel to the UK or even for the business. You are saying that we will be hearing a good news of resumption of PIA flights to London and Manchester. I'm feeling more optimistic than I did 1 year ago. So when I was the Shadow Transport Minister, I met with the Executive Director of Heathrow and also with the Aviation Minister in the British government to actually talk about this, because actually it was stopping businesses grow in Ilford. We have many people, whether it be in property or accountancy or a range of other fields, who have both businesses based in East London and based in Islamabad or Lahore or Karachi, and actually that extra time, maybe a 5 or 6 hours delay, means that it's more difficult to do business because it's more time, less time. And time is money. So the more time you're travelling, the less time you're able to be spending, of your family or running the business successfully. So it is a really important thing. So that's the number one sort of area I see for cooperation. Number two, I would say, is around climate change. We've seen obviously the terrible floods that have impacted Pakistan, and I know that in Naz's and my constituency, people raise hundreds of thousands of pounds to send here to Pakistan in a very short amount of time. But, we need to be honest, why were those floods so severe? There are definitely some elements of climate change being part of that, and I think that actually the technological advances that the UK is making, we need to be working and sharing them with Pakistan, and that is an opportunity to grow our industries in manufacturing and a whole range of other areas. So that's where I would like to see some initial further cooperation. So I'm happy that climate change is on the agenda of the cooperation. Raja Najabat Hussain साहब, आपकी मेहरबानी, आप ले आते हैं ऐसे डिस्टिंग्विश्ड पार्लियामेंटेरियंस को, एमपीज़ को। जब आप इनको लेके आते हैं, आपको ख़ुद कितनी खुशी होती है? आप इनको मीरपुर लेके जा रहे हैं, आप इनको मुजफ्फराबाद लेके जा रहे हैं, आज़ाद कश्मीर लेके जा रहे हैं, आप ख़ुद हुर्रियत रहनुमा हैं, ओवरसीज़ नुमाइंदे हैं, एक चेयरमैन हैं उसके। सबसे पहले तो मैं पराचा साहब आपका मशकूर हूँ, और उसके बाद मैं ऑन द टीवी चैनल आई वुड लाइक टू थैंक माई honorable parliamentarians from the British Parliament. I've started this work on Kashmir a long time ago. मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में, बरतानिया में और मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से जितना काम हो रहा है, वो श्रीनगर के बाद अगर कहीं दुनिया में कोई काम हो रहा है तो वो बरतानिया में हो रहा है। हमारे बरतानवी पार्लियामेंट में 100 से ज़ायद मेंबरान पार्लियामेंट ऐसे हैं जो कश्मीर के हवाले से हर हफ्ते, हर महीने, हर ऐसे मसले पे जब कोई चीज़ मकबूजा कश्मीर में होती है, कोई हादसा रुनमा होता है, कोई ज़्यादती होती है, किसी लीडर को गिरफ़्तार किया जाता है, किसी के ख़िलाफ़ मसलन यासीन मलिक के ख़िलाफ़ मुकदमा आते हैं, इसी तरह दीगर मामलात में हर वक्त आवाज़ बुलंद करते हैं। और इनको पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर दौरा करवाने का मकसद बुनियादी तौर पर ये होता है कि लोगों से मिलें बर रास्त, हमारी तकरीर ना सुने, हमारा प्रोपगंडा ना समझें, और मौके पर आके लोगों से मिलें, बर रास्त ये देखें, बर रास्त सुने। हमने पूरी कोशिश की है कि भारत की तरफ से भी हमें इजाज़त मिले और हम मकबूजा कश्मीर जा सकें। ये पार्लियामेंटेरियन कोशिश कर चुके हैं। इससे कबल
ہماری جو آل پارٹیز کشمیر پارلیمنٹری گروپ کی چیئرپرسن ہے ڈیبی ابرامز, اس نے تو دہلی تک ویزا بھی لے لیا تھا, لیکن انہوں نے اس کو دلی سے واپس کر دیا تھا, ڈیپورٹ کر کے بھیج دیا اور وہ پاکستان آ گئی تھی. اسی طرح یہاں یہ تینوں جو ممبران پارلیمنٹ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں, اینڈریو گوین جو ہے وہ لیبر فرینڈز آف کشمیر کا چیئرمین ہے, ناز شاہ وائس چیئر پرسن ہے, اور سام ٹیری جو ہے وہ آل پارٹیز کشمیر پارلیمنٹری گروپ جو برٹش پارلیمنٹ میں ہے اس کا وائس چیئرمین ہے. تو یہ لوگ بھی ہر وقت کشمیر کے حوالے سے اپنے شہر کے اندر, اپنے حلقے کے اندر, پارلیمنٹ کے اندر اور اپنی پارٹی کے اندر. اور میں آپ کو جس طرح سام ٹیری آپ کو سنا رہا تھا خوشخبری, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آنے والے یہ 3 دن ہیں, سنڈے سے لے کر بدھ تک, کنزرویٹو پارٹی کی کانفرنس میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے 3 میٹنگز ہو رہی ہیں. پھر یہ ہمارے ساتھی واپس جائیں گے تو لیبر پارٹی میں 8 تاریخ سے لے کر 11 اکتوبر تک پارٹی کانفرنس ہو رہی ہے. انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے, اور پہلے بھی ہمارے ساتھ یہ ان کی کمٹمنٹ تھی کہ وہاں جا کر یہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے فرنج میٹنگ بھی کریں گے, لیڈرشپ کو بھی مائل کریں گے کہ وہ کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھائیں. وہاں کی ڈپٹی لیڈر اینجلا رینر ہمارے ساتھ پہلے بھی کشمیر کے حوالے سے کام کر چکی ہیں. سو اگلا ہفتہ رائے صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ امپارٹنٹ ہوگا بیک ان برٹن کے, اس پہ لیبر پارٹی بھی اپنی کانفرنس کر رہی ہے اور کنسرویٹو پارٹی بھی. ادھر رکیے گا, میں ناظرین بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, پاکستان میں جو سیاسی صورتحال ہے, خاص طور پر الیکشن آ رہے ہیں, میں ضرور ایم پیز کی اپینین لینا چاہ رہا ہوں, کیونکہ پاکستان کا الیکشن پوری دنیا میں دلچسپی کا مرکز بنا ہوا ہے. امریکی ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ بھی بات کر رہے ہیں, امریکی کانگریس والے بھی, کانگریس مین جو ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں. برٹش ایم پیز کیا سوچتے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ یہ انتہائی اسپیشل ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں روبرو پروگرام کی, کیونکہ 3 آنریبل ممبرز آف برٹش پارلیمنٹ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. آج ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں ہم ان سے بات کر رہے ہیں برطانیہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے حوالے سے, ساتھ ساتھ کشمیر کے حوالے سے بھی. آنریبل ممبر پارلیمنٹ اینڈریو گوین, Pakistan is also having elections. Like in many countries, next year is full of election. Major capital, major countries, they are having election. But how encouraging it is for members of a country where in fact the democracy is given an example of its functioning. How encouraged you feel about, you might have heard that in January next year, in the end of January, Pakistan is having election. Yes, we've heard that, and of course, as representatives from the United Kingdom Parliament, which is often described as the mother of parliaments across the world, we cherish democracy. We know that it's only through democracy that you can build the dialogue that brings different arguments together, that you can pass good laws through debate and discussion and compromise sometimes. It's really important for us that Pakistan has a stable and functioning democracy, and that elections are conducted freely and fairly for all citizens, so that it is the agreed, settled will of the people of Pakistan, whatever the result turns out to be. That's quite encouraging to know. Naz Shah Sahiba, Honorable Member British Parliament, پاکستانی جو باہر رہتے ہیں ان کے دل سچی بات ہے پاکستان کے لیے دھڑکتے ہیں, پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ابھی پاکستان میں ایک جمہوری عمل آگے بڑھ رہا ہے. جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہونے ہیں. وہاں بیٹھ کے, یو کے میں بیٹھ کے, برفورم میں بیٹھیں, لندن میں بیٹھیں, مانچسٹر میں بیٹھیں, جہاں بھی بیٹھیں, آپ کو کتنا اچھا لگتا ہے کہ پاکستان ایک جمہوریت کی طرف, جمہوری اداروں کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھا رہا ہے؟ تو ہمیں تو اچھا ہی لگتا ہے کہ اگر ڈیموکریسی یہاں ہوگی نا تو ملک کی ترقی ہوتی ہے. ڈیموکریسی کے ذریعے جو ہے نا, جمہوریت کے ذریعے انسانوں کے آواز پہ آگے آتے ہیں, وہ خود فیصلے کرتے ہیں کہ ان کے حق, اپنے حق کے مطابق ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہوتی ہے کہ ہم چوز کریں کہ ہمیں کون, ہمارا گورنمنٹ کون بنائے گا, ٹھیک ہے نا. اور وہ ضروری ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں جو پچھلے کئی سالوں سے یہ جو ٹرموائل ہے, ڈیموکریٹک ٹرموائل ہے, چینج آف لیڈرشپ ہے, ہاں, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ عوام کو آواز دی جائے.
और आवाम को जब आप आवाज़ देते हैं ना तो तरक्की भी होती है और उसको उनको भी यकीन होता है कि वाकई हमारी आवाज़ सुनी जा रही है। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, ये अहम है। जैसे कि एंड्रू ने कहा है कि बिल्कुल ये हम तो हमें तो कहा जाता है कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारी, जो मैग्ना कार्टा से शुरू हुए ये कॉन्सेप्ट और आज इस 21st सेंचुरी तक हम आ गए हैं। तो बिल्कुल ब्रिटानिया को अक्सर ये कहा जाता है। तो मैं तो कई दफ़ा पाकिस्तान आई हूँ, जो हमारी जो पार्लियामेंट्री सर्विसेज है उनके साथ यहाँ के MNAs को ट्रेनिंग देना, मैंने यहाँ की कैबिनेट को भी एड्रेस किया हुआ है। इसी लिहाज से डेमोक्रेसी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, योर कंट्रीब्यूशंस आर एक्नॉलेज्ड हियर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए ना मैं तो खुश हूँ अगर यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। यानी ये एक अच्छा कदम है जो पाकिस्तान मिल के बतौर एक स्टेट ले रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। Honorable Member Sam Tarry, Pakistan is moving forward to another milestone for in process of democratic institutions, setting up, establishing democratic institutions. A few days back, Asian Development Bank also released a report and said that the economic problems of Pakistan will be solved when elections are there, election take place and the new government is there. So how positive you feel about it that Election Commission of Pakistan has announced a certain week in which general elections will be held? It's very clear that the people of Pakistan need to express their democratic wishes. If we're talking about the economic development of the country, people and businesses internationally or even nationally need to know that there's stability. They're going to need to be able to plan their investments, and they can only do that if they've got a stable political field of which to sort of go into. We obviously have had a fairly unstable period of politics in Pakistan, and so I think businesses will be looking at it, citizens will be looking at it and thinking, we want to have a clear, fair result with all participants able to take part in that election, and to do so in a way that international observers and the people of Pakistan can genuinely believe in as a fair result. And I think that will be welcomed globally, and of course will be a step forward for the economic stability of Pakistan. That's something, we also want that there should be economic stability in Pakistan. How this process can be an incentive for more investment in Pakistan, more trade relationship in Pakistan, because Pakistan has now set up a special investment facilitation council to invite and guarantee maximum profit for whatever the investment is done in Pakistan. Clearly, Pakistan is a country that's rich in many resources and minerals, and it needs, political stability for people to be able to take decisions. If they're going to invest, millions or even billions of US dollars equivalent into Pakistan, they'll need to know that that money is going to be spent wisely, that there's a fair process and genuine governance and oversight throughout, not just the government but the civil service below that as well, in how that is directed, and that they can obviously extract some degree of profit as well. I mean, no company is going to do it out of the goodness of their heart. I wish that they would. But obviously the government also has its own mechanisms for its national programmes where it will directly invest itself. And again, that will also need, strategic oversight of a stable government and a clear, firm leadership. That's great point. Rai साहब, एक और आप चूँकि ओवरसीज़ हैं, बाहर रहते हैं, कनाडा में एक वाक़या हुआ है और उसका डायरेक्ट असर पड़ रहा है इस रीजन पे। वो सिख एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निजर को मारा गया। कश्मीरी फील करते हैं कि जो हम कहते थे आज दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं? राजा साहब, हिंदुस्तान ने जो कुछ कश्मीरियों के साथ 75 साल में किया, पूरी दुनिया ने देखा। 5 लाख से ज़ायद कश्मीरियों को शहीद किया गया। कोई घर खाली नहीं है जहाँ शहीद नहीं है, कोई ऐसा शहर इलाका खाली नहीं है जहाँ इंडियन क्रैकडाउन के ज़रिए लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। यही हाल अब सिखों के साथ, वहाँ दलित्स के साथ, वहाँ ईसाइयों के साथ किया जा रहा है। और इस सारी चीज़ को पाकिस्तान ने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें की। कश्मीरी दुनिया भर में जहाँ भी बैठे हुए हैं वो अपनी एक कैंपेन चला रहे हैं। हम अपना कश्मीरियों का केस पेश करते हैं,
लेकिन हिंदुस्तान ने ना सिर्फ सिखों को बाहर मुल्कों में मरवाया, बल्कि उसकी जो हमारे लिए ख़तरनाक बात यह है कि हमारे कश्मीरी लीडरों मकबूल भट्ट को शहीद किया, उसको तिहाड़ जेल में ही दफन कर दिया। अफजल गुरु को शहीद किया, तिहाड़ जेल में ही दफन किया, उसकी बॉडी भी नहीं दी। इसी तरह सैयद अली गिलानी को नज़रबंदी के दौरान एक तरह से कत्ल किया गया, और उसके बाद उनको दफनाने के लिए भी उनकी घर वालों की मर्ज़ी नहीं शामिल की। घर वालों ने कहा भी सही उन्होंने। तो इसके अलावा यहाँ जो कश्मीरियों को भी यहाँ रावलाकोट में, पिंडी में, यहाँ आपके प्लेटफार्म की वसातत से मैं आज वज़ीर ख़ारजा के अलावा प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने जो हमें ब्रीफिंग दी या हमें नाज के सवालों के जवाब में उन्होंने कुछ बताया, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट पाकिस्तान अपना एक किरदार अदा कर रही है, लेकिन आलमी बरादरी को, हमारे अपने अदारों को, जो अदारे या हमारी मीडिया है, हमारे जर्नलिस्ट हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल हैं, हमारे थिंक टैंक्स हैं, ये सारे लोग भी दुनिया को बताएँ कि सिर्फ कश्मीर के मसले की वजह से कश्मीर और का मसला पाकिस्तान और इंडिया के लिए नज़ा का नहीं है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए, तमाम अक़लीतों के लिए, तमाम ऐसे लोगों के लिए जो उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं, ख़िलाफ़ खालिस्तान वाले अपने हकूक़ मांग रहे हैं। इसी तरह मकामी लोग, मणिपुर वाले अपने हकूक़ मांग रहे हैं, आसाम वाले अपने हकूक़ मांग रहे हैं, बिहार में बैठे हुए लोग अपने हकूक़ मांग रहे हैं। उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि आलमी बरादरी की, हमारे दोस्त कश्मीर के हवाले से तो सारे बोलते हैं वहाँ बरतानवी पार्लियामेंट में, लेकिन जस्ट ये जो अपने कनाडा के वज़ीर आज़म ने जो आवाज़ बुलंद की है, मगरब ने उसका साथ दिया है। मैं समझता हूँ इससे हमारी हुकूमत को, हमारे अदारों को, हमारी तंजीमों को, हमारी जमातों को, हमारी लीडरशिप को इकट्ठे होकर भारत के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलानी चाहिए, ताकि उसका असली जो चेहरा है वो दुनिया को दिखाया जा सके। वेल सेड राज साहब। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ब्रिटिश MPs का ये वफ्द कश्मीर भी गया है, आज़ाद कश्मीर गया है, ये मीरपुर गए हैं, मुज़फ़्फ़राबाद गए हैं, इन्होंने क्या देखा मैं ज़रूर इनसे पूछूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप ये खसूसी प्रोग्राम रूबरू देख रहे हैं, क्योंकि आज ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑनरेबल एंड्रयू ग्विन, you are head of this delegation and you are head of the group back in the British Parliament on Kashmir. What you observe whenever you come to Pakistan and go to Muzaffarabad or Mirpur or Bagh or Rawalakot, wherever you visit, how you describe your findings rather? So it's really important that as parliamentarians we are as well informed on a subject as it's possible to be. There's an old saying from my secondary school, and it's I listen and I forget, I see and I start to understand, I do or I experience it and I do understand. And so that is very relevant. I can have all the briefings back in London, and it goes in one ear and out of the other, or I remember bits of what I'm told, but it's only coming out here and meeting real people affected directly by the conflict, families that have been separated, people who know family members who are living under real oppression on the Indian side of the line of control. It's only by experiencing it on the ground that you understand. How this oppression that you talked about, it can be done away, because the international community has to speak, as Raj Sahab is talking of. So it's really important that we use our important position in the British Parliament to keep telling the story of Kashmir. Look, it's a story that's 76 years old, and we now live in a 24-hour news cycle. There'll be a catastrophe on one side of the world, it will dominate news channels, headlines across the world. It's live stream. Absolutely. But tomorrow there will be another catastrophe somewhere else in the world, and we forget what we were told yesterday. So it's our job to keep the story of Kashmir alive, but more than that, to speak out about the human rights abuses. Human rights are universal. They are something that belong to every human being on this planet. They are our birthright, and those human rights are being denied the population of Indian occupied Kashmir. And I feel very strongly that the main human right, that all of the human rights flow from: the right to education, the right to health, the right to family life, the right to religious freedom, the right to political association, and so on and so on and so on.
all comes from the right to choose by whom you are governed and how you are governed, and that is what fundamentally has been deprived of the Kashmiri people for far too long. یہ سیدھی سیدھی سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کر رہے ہیں کہ 76 سال میں اس سے انکار کیا گیا ہے. کشمیری اور کتنا انتظار کریں گے؟ دیکھیں ہم نے جب مظفر آباد گئے تھے نا تو ہم کیمپ میں گئے تھے. وہاں ہم نے لوگوں سے ملے جنہوں نے اپنی ایک بزرگ تھے جن کی بہن کا کبھی ان سے اتنے سالوں میں ملاقات نہیں ہوئی, قبروں پر نہیں جا سکتے, یہ نہیں کر سکتے. مشال ملک سے بھی ملے تھے, ان کی بھی کہانی سنی, انہوں نے بھی ہم سے بہت باتیں کی. تو یہ جو اسٹرگل ہے نا, ہم تو چاہتے ہیں اگر میرے بس میں ہوتا تو یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی. مگر انڈیا کی جب راجہ صاحب کہتے ہیں نا انڈیا کی یہ جو اور یہ کینیڈا کی بات ہے, یہ سکھوں کی بات ہے, عیسائیوں کی بات ہے, یہ دیکھنا ہے. ہم نے دنیا کے سامنے ہمیں موقع ملا ہے کہ پیش کریں کہ یہ جو مودی کی آئیڈیالوجی ہے یہ آر ایس ایس میں اسٹیپڈ ہے. آر ایس ایس کی انسپریشن کون تھا, کہاں سے ہے؟ وہ ہٹلر سے ہے. وہ ہٹلر کی انسپائرڈ ایک موومنٹ ہے, اور وہ جو آکیپائڈ لیگلی آکیپائڈ کشمیر پر کر رہے ہیں تاکہ اس کی شکل ہی بدلا دیں. یہ جو آرٹیکل 370 کی ریووکیشن تھی, مودی کا کیا خیال تھا کہ جیسا اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ اسی طرح وہ بھی کر رہے ہیں. اب دیکھیں ہماری قبروں کو توڑ رہے ہیں, چرچز کو توڑ رہے ہیں, اور جو بھی مسلمانوں کے خلاف مخالفت اتنی ہو رہی ہے. دیکھیں یہ ہم نے دنیا کے سامنے پیش کرنا. اور مودی جو ہے نا خود کے یہ جو ڈپلومیٹک انسیڈنٹ ہوا ہے کینیڈا کے ساتھ, کینیڈا نے امریکہ سے بھی بات کی ہوئی ہے, برطانیہ کے بھی ساتھ بھی, آسٹریلیا سے بھی بات کی, سب کے ساتھ بات کر کے انہوں نے بات ظاہر کی تھی. کیونکہ ایسے کوئی قدم آسانی سے نہیں لیے جاتے, خاص کر کے پرائم منسٹروں سے. اور جو ٹروڈو نے کیا ہے اور ہمارے ویسٹرن جو ڈیموکریسیز ہیں انہوں نے گٹھے کہا ہے کہ انڈیا کو کوآپریشن کرنی چاہیے, یہ اچھا نہیں ہے انڈیا کے لیے. کیونکہ انڈیا ایک بہت ضروری ملک ہے, ٹریڈ کے لیے بھی, برطانیہ کے لیے بھی, اور جو وہ انڈینز رہتے ہیں ان پر بھی شدید مشکلیں ہوتی ہیں. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان اور انڈیا پڑوسی ہیں, اور پڑوسیوں میں اخلاق ہونا چاہیے. یہ جو بات ہوتی ہے ہماری ہمیشہ لڑائی کی, وہ نہیں ہونی چاہیے. اور جو آزادی ہے کشمیریوں کی وہ حق ہے. ان کو وعدہ کیا گیا تھا, ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو پلیبیسائٹ ملے گی, ان کو کہا گیا تھا, ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں کہ آپ کو آزادی ملے گی. میں آزاد کشمیر میں رہی تھی, تو دیکھیں وہاں مجھے کبھی کوئی ڈر نہیں تھا کہ کوئی آ کر میرے سر پر بندوق رکھے گا, میرے ساتھ زیادتی کرے گا, یا میرا بھائی واپس آئے گا, یا قبر ملے گی بھی, یہی نہ اسے نہیں ملے. وہی جو آپریشن کی بات یہ کر رہے ہیں. بالکل. آنریبل ممبر سیم ٹیری, ہاؤ دس رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن can be finally granted to Kashmiris? One of the things that has been said, which I would disagree with, is that it's just a Pakistan-India bilateral issue. It's not. It's an international issue. And actually, we are here as British parliamentarians who, feel, I think all of us, a degree of responsibility. Naz mentioned Palestine. Again, at the same period of time, the end of the British Empire, we left a mess. We left unresolved problems that have been unfinished agenda of partition, you see. Absolutely. And the people that have suffered have been ordinary people of Kashmir who've never been given the chance to choose their own pathway, their own freedom. And so there has to be an international framework. There has to be a number of things, I think. Particularly, I would like to see the British government taking a more strident approach than its current position, to say that the UN resolutions that India has ignored should not be ignored. I think there should be international pressure brought on India to reverse the constitutional decisions it made in 2019, and also as well pressure put on India to stop the demographic changes that are being deliberately enacted to try and either change the result of a future plebiscite, or indeed some organisations have even termed it genocide, i.e. the removal of a people. And we obviously met on our trip people that have been refugees in recent years, but also refugees that have been refugees for 30, 40 and 50 years plus. And so that is a strategy that's been enacted by India at the moment, and that does need to be challenged both through the UN, potentially through the international courts, but actually Britain as both a partner to India and Pakistan, whether it be in trade or other areas of mutual cooperation,
we need to use that leverage to say, you know, you cannot keep abusing human rights if we are going to go forward with trade agreements with you. That's very important. राय साहब, इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा अच्छा इन तीनों मेहमानों ने पर्सपेक्टिव दिया, बट ये फिर हो क्यों नहीं रहा? देखें जी पराचा साहब, मसला ये है कि मैंने जिस तरह पहले भी कहा कि हमारे बहुत दोस्त मौजूद हैं बरतानिया में, यूरोप में, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, लेकिन ये काम बुनियादी तौर पर आज की दुनिया में इकनॉमिक है, दूसरा मुल्कों का केस है, और तीसरा जिस तरीके से इंडिया ने कोशिश की है, जब उसको हुकूमत में मात हुई, करारदादें मुतअद्दिद पास हुई कश्मीरियों के हक़ में, उसे पाकिस्तान को बदनाम करने की जो चाहते थे वो 47 में, और उसके बाद, लेकिन अब जो सूरत हाल बन रही है वो मैं समझता हूँ ना सिर्फ पाकिस्तानियों के हक़ में है, कश्मीरियों के हक़ में भी है, इसलिए कि उस 47 की उस लड़ाई में मारने वालों में हमारे सारे फहरिस्त हमारे सिख भाई भी थे, मुसलमानों को कत्ल करने वाले सिख भाई भी थे, में स्पेशली। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ उनके साथ जो हो रहा है उसकी वजह से हमें भी, लेकिन हम पाकिस्तानी और कश्मीरी सारे उनके हक़ में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। दुनिया भर में फैले हुए कश्मीरी और हमारे दोस्त जो हैं वो अपनी जदोजहद ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये हुकूमतों के मसाइल हैं और हुकूमतें अपने मफादात देख रही हैं, लेकिन रियासत के लोगों ने एक तय किया हुआ है, उस वक्त से लेकर आज तक कोई जगह ऐसी नहीं, कोई महाज ऐसा नहीं, चाहे वो शहर हो, देहात हो, गाँव हो, जवान हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, हर कश्मीरी अपने वतन की आज़ादी के लिए और उस मिशन की तकमील के लिए जो आपने अभी बात की, अनफिनिश एजेंडे को ख़त्म करने के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं, पाकिस्तान को मुकम्मल करना चाहते हैं। हम तो अक्सर ये कहा करते हैं कि जी हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमने बनाया था, इसलिए कि 19 जुलाई 1947 इसी वजह से ये आज़ादी की जो तहरीक है वो जारी है। बहुत शुक्रिया राजा नजाबत हुसैन साहब, आप तशरीफ़ ले आए। ऑनरेबल सैम टायरी, मेंबर पार्लियामेंट फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, बहुत शुक्रिया आप, थैंक यू वेरी मच, यू नो यू स्पेयर टाइम। नाज शाह साहिबा, मेंबर पार्लियामेंट, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ ले आए। एंड्रयू ग्विन, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर। नाजरीन, एक पर्सपेक्टिव है ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या सोचा जाता है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से, और ये चूँकि कश्मीर ग्रुप है तो ये कश्मीर के बारे में क्या सोचते हैं, ये आपके सामने हमने उन्हीं की ज़बानी पेश किया। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।